हेलो जी, सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। दिस इज द लास्ट फॉर दिस चैप्टर है ना, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा। प्लस आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का लास्ट चैप्टर है, लास्ट पार्ट है आज। फाइनली आज हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज +2 की खत्म हो जाएगी। ठीक है, वी आर वेरी गुड कि हम वी आर वेरी गुड इनफ, हम लोगों ने 16 चैप्टर खत्म कर लिए हैं इन अ लिटिल स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक बार इस सीरीज को दोबारा देख सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हो, आप लोग 1.5 या 2x की स्पीड पे से रन कर सकते हो, ताकि आप लोग की रिवीजन हो जाए एनसीईआरटी के माध्यम से। तो आज बेसिकली छोटा सा पार्ट है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को कट करना, देन फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, एंड एनसीईआरटी समरी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर टेलीग्राम हैंडल। अगर इनकेस आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, फिर इसी के थ्रू आपको सारे अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का जर्नल मतलब होता है फॉरेस्ट की कटिंग। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड लैंड टू नॉन फॉरेस्ट एरिया। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% forests have been lost in the tropics compared to only 1% in the temperate region. The percentage scenario of the deforestation is particularly grim in India, मतलब ज्यादा है। At the beginning of 20th century, forest covered about 30% of the land of India. By the end of century, it struck to 21.54%, whereas National Forest Policy 1988, ठीक है, National Forest Policy के according, India has recommended 33% of forest cover for plains and 67% for hills. How does deforestation occur? अब deforestation होती कैसी है? A number of human activities contribute to it. One of the major reasons is the conversion of forest to agriculture land so as to feed the growing human population. Trees are exed for timber, मतलब काटा जाता है, exed मतलब काटना, ex is an instrument जिससे आप लोग काटते हो, for timber, firewood, cattle ranching and several other purposes. Slash and burn agriculture, commonly known as jhum cultivation, in the northern eastern state of India have also contributed to deforestation. In slash and burn agriculture, the farmer cut down the tree or forest and burn the plant remains. The ash is used as fertilizer and the land is then used for the farming or cattle grazing. After cultivation, the area is left for several years so to allow it to recover. The farmers then move on to the other area and repeat the process. क्या कर रहे हैं वो, अपनी जगह भी खराब कर रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं वो भी जगह खराब कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे टेक्निक यूज करो या तो सब हर हमेशा के लिए बेनिफिट हो। In earlier days, when June cultivation was prevalent, enough time gap was given so that land recovered for the effect of cultivation. क्योंकि फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, तो उस फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए हमें कुछ टाइम देना पड़ता था। With increasing population and repeated cultivation, this recovery phase is done away with, resulting in deforestation. ठीक है, अब क्योंकि इतनी पॉपुलेशन के लिए हम वेट तो नहीं कर सकते इतनों को खाना देने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जगहें फॉरेस्ट काटनी शुरू करती हैं। What are the consequences of deforestation? अब deforestation के क्या क्या effects हो सकते हैं? One of the major effects is enhanced carbon dioxide concentration in the atmosphere because trees that could hold a lot of carbon in their biomass are lost with deforestation. क्या कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एनवायरमेंट में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कोज लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेशन डिस्ट्रक्शन, है ना, बहुत सारे लोगों का घर टूट जाता है, मतलब घर लोगों ने जानवरों का। Disturb hydrological cycles, cause soil erosion, and may lead to desertification in extreme cases. Reforestation is the process of restoring a forest that one can existed but removed at some point of time in past. Reforestation may occur naturally in a deforested area. However, we can speed it up by planting tree with due consideration to biodiversity that earlier existed in that area. केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं यहाँ से। ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। इन 1731 द किंग ऑफ जोधपुर इन राजस्थान asked one of his minister to arrange wood for constructing a new palace. The minister and the worker went in the forest near a village inhabited by Bishnois. कौन सी कम्युनिटी रहती थी वहां पे, Bishnois community, to cut down the tree. The Bishnoi community is known for the peaceful coexistence with the nature.
द एफर्ट टू कट डाउन द ट्री बाय द किंग वॉज थ्वार्टेड बाय बिश्नोइस, ठीक है, बिश्नोइस उनका मना कर दिया कि हम नहीं काटने देंगे. अब बिश्नोई वुमेन अमृता देवी showed extemporary encourage by hugging a tree and darking kings meant to cut her first before cutting the tree. उसने क्या कहा कि पहले मेरे को काटो, उसके बाद पेड़ को काटना. वो पेड़ के साथ जाके चिपक गई. The tree mattered much more than her life, than her own life, है ना. उसके लिए उसकी जान से ज्यादा क्या प्यार था, ट्री. सैडली, बट दुखद या फिर बहुत बुरे चीज है कि जो किंग के जो भी वो काटने आए थे, whosoever is, उन्होंने उनको मार दिया. And cut down the tree along with Amrita Devi. Her three daughters and her hundred of other Bishnois followed her and thus lost their life-saving tree. ठीक है, अपनी जान ही गवा दी सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए. ठीक है, देखिए कितना लोग कंट्रीब्यूट करते जस्ट फॉर अ ट्री. Now we are in a history. Do we find a commitment of this magnitude where human beings sacrificed their life for a cause of environment? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा यार आज के डेट में तो. The government of India had recently instituted the Amrita Devi Vishnoi Wildlife Protection Act for individual or communities for rural areas that has shown extraordinary courage and dedication in protecting wildlife. You may have heard of Chipko movement of Garhwal in Himalayas. In 1974, local women showed enormous bravery in protecting trees for the acts of contractor by hugging them. People all over the world have acclaimed the Chipko movement. Chipko movement क्या था? सेम था, पर इसमें क्या था कि 3-4 बंदे इकट्ठे होकर एक पेड़ के चिपक जाते थे और अगर जो कोई काटने आता था तो they refused to do that. Realizing the significance of participation by local communities, the Government of India in 1980s has introduced the concept of JFM, Joint Forest Management, so as to work closely with the local communities for protecting and managing forest. In return for their service to forest, communities get benefit of various forest products like fruits हो गए, gum हो गए, rubber हो गए, medicine हो गए. These are day-to-day life use में जो आते हैं आपके. And thus the forest can be conserved in a suitable manner और फिर sustainable manner. ठीक है, सस्टेनेबल मैनर मतलब आप अपना यूज भी निकालते हो और फॉरेस्ट को भी हार्म ना हो. ठीक है, इसे कहते हैं सस्टेनेबल. देन दिस इज योर समरी. फाइनली वी आर गोइंग अहेड टुवर्ड moving ahead towards completing our chapter. Major issue related to environmental pollution and depletion of valuable natural resources vary in the dimension from local, regional to global level. Air pollution primarily results from burning of fossil fuel, example coal and petroleum. In industries and in automobiles, they are harmful to human, animals and plants and therefore must be removed to keep an air clean. Domestic sewage, the common source of pollution of water body, reduce dissolved oxygen but increase biochemical oxygen demand of receiving water. Domestic sewage is rich in nutrients, especially nitrogen and phosphorus. जिससे क्या होती है आपकी बायोमैग्निफिकेशन, which cause eutrophication. यूट्रोफिकेशन भी कह सकते हो और बायोमैग्निफिकेशन भी हो सकती है इससे. अल्टीमेटली इसी से ही बायोमैग्निफिकेशन होगी ना. एंड न्यूसेंस क्रिएटिंग एल्गल ब्लूम. Industrial waste water are often rich in toxic chemical, especially heavy metals and organic compound. Industrial waste water harm living organism. Municipal solid waste also create problem and must be disposed of in landfills. Disposal of hazardous waste like defunct ship, radioactive waste and e-waste require additional effort. Soil pollution primarily result for agriculture chemical, example pesticide and leachate for solid waste deposited over it. Two major environmental issues of global nature are increasing greenhouse. दो मेजर क्या है वो बता रहे हैं आपको. ग्रीन हाउस एंड विच कॉज वार्मिंग ऑफ अर्थ एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो दो मेजर जो इंसिडेंसेस एनवायरमेंटल इश्यूज अभी चल रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड अनदर वन इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है, और कौन सी ओजोन? स्ट्रेटोस्फेयर वाली, ट्रोपोस्फेयर वाली नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर वाली. Enhanced greenhouse effect is mainly due to the increased emission of carbon dioxide, methane, nitrous oxide and CFCs, chlorofluorocarbons, and also due to deforestation. It may drastically change rainfall pattern, global temperature. Besides deleterious affecting living organisms, ozone in the stratosphere, which protects us from the harmful effect of ultraviolet radiation, is depleting fast due to emission of CFCs, thus increasing the risk of skin cancer, mutation and other disorders. So finally यहाँ पे हमारी क्लास +2 की पूरी एनसीईआरटी बुकलेट खत्म हो जाती है. ठीक है, सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद है ना फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन जितना आप लोगों ने दिया इसमें, फॉर योर पेशेंस, फॉर मेंटेनिंग दिस.
है ना। तो बीच में हो सकता है थोड़ा सा लैग आया हो यार, मेरे को पता नहीं चला, ये ड्रॉप फ्रेम हो रखा है 1.2% है, कुछ ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इनकेस मैं देख लूंगा कहाँ पे लैग है, अगर तो कोई रिक्वायरमेंट होगी मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को पार्ट बता दूंगा। बट बाकी सारा सही है लेक्चर, ठीक है, 1.2% का ड्रॉप है, कोई ज्यादा भी ड्रॉप नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, है ना। टुडे तो क्या मतलब, अब तो आपकी ये सीरीज खत्म ही हो गई। सो अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों के मंडे से, ठीक है। अभी आप लोग रेस्ट कीजिए थोड़ा सा, अगर जो कोई पीछा बैकलॉग है वो क्लियर कीजिए। मीनवाइल मंडे से स्टार्ट करेगा आपका न्यू बैच, दैट इज योर, आपको उसकी वीडियो जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय, एंड अगर जो कोई डाउट है तो अगेन कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।